किसी को होती है मोहब्बत की तरह। आप सिल्क हो ना? हो गई तो जान अटक जाती है। मुझे जो चाहिए उसका मजा सिर्फ रात को ही आता है। मुझे जितने रंग उतने रूप, किसी को लगती है लॉटरी की तरह, लग गई तो किस्मत खुल जाती है। पब्लिक सामान देखती है। किसी को लगती है लॉटरी की तरह, लग गई तो किस्मत खुल जाती है। पब्लिक सामान देखती है, दुकान नहीं। और वैसे भी जब शराफत के कपड़े उतरते हैं तो सबसे ज्यादा मजा शरीफों को ही आता है। किसी को जहर की तरह कि अब पानी भी पीता हूं ना तो आग लग जाती है। उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी। छूना ना छूना ना, छूना ना छूना ना, अब मैं जवां हो गई। I think I've never enjoyed being a woman more than in The Dirty Picture. It celebrates the woman. Like a rainbow in all her colors. कुछ लोगों को बचाने में शायद मुश्किल हो, but especially as a woman, I'm sure you'll agree. पहली बात ये कि promos are awesome. Thank you. Secondly, कितना difficult रहा आपके लिए 3 आदमियों को handle करना from a different age group, नसीर साहब, इमरान and तुषार, off screen और on screen दोनों। सोने पे सुहागा। Hello? एक से मेरा क्या होता? No, but really it's been fantastic. I don't want to give the typical answers. मैं नहीं कहना चाहती कि उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, blah 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 blah. वो सब आप जानते हैं क्योंकि आप फिल्म में देखेंगे. I've worked with Naseer Saab before, and I've said that a million times before. It's an honor working with him. अभी मैं अपना nervousness कम दिखाती हूँ उनके सामने. I don't need to cloak it as much. But he's so encouraging without being blatant about it that I'll always be grateful to him for that. Thank you, sir. And I was wondering how it would be with Imran. I still am. No, it's been a great deal of fun. Initially लगा कि अच्छा ज्यादा हंसते नहीं हैं, ज्यादा बोलते नहीं हैं, अब उल्टा हो गया है। सिल्क को देखने के बाद इनका मुंह बंद ही नहीं होता। And Tushar, what can I say? We had a lovely time shooting together in Hyderabad. Even if he doesn't say the same thing, मैं कहूँगी मैंने उनको actually convince कर दिया था कि जहाँ हम लोग shoot कर रहे थे रामोजी में, that was the best place on planet Earth. I made sure he stayed back even when he was not shooting because he's such a positive, wonderful person to be around besides being a fun co-star. He has a straight-faced humor. You don't even know he's cracked a joke and he has. So it's been great. Can I also say something about my director? I don't know how he could have thought of me, how Ekta could have thought of me for this film, how Rajat could have written that beautifully. If I do a good job, I take the responsibility. No, if I do a good job, it's completely thanks to the vision, to the great writing, and the support.
मैंने फिल्म शुरू करने से पहले ये कहा था कि इस फिल्म में मुझे मैं मिलन का हाथ पकड़ के चलने वाली हूँ या मिलन मेरा हाथ पकड़ के चलेंगे, because I didn't know which way it worked, but I just knew that I had to trust Milan completely, and I can say it's been so worth it so far. I hope you all feel the same way. And Ekta, hats off to you for the kind of work you're doing. Every film is so different, and great admiration. We worked together. We both started together in Hum Panch, and we've come a long way. God's been kind. So I've said everything. Can I leave now? Thank you very much.